Myself Bhagyashree, and today I'm going to discuss about the microservices in the .NET Core. And after the discussion, I also create one of the sample application which is in the microservices base, so that will we get the clear idea. For that purpose, please like, share, subscribe this channel. And on this video, I'm expecting like 50 comments. Then I will create the one microservices practical application for all of you. So let's start with that. For the today agenda in the microservices, I will say I have like first I have to be discussed as a basic fundamental about the microservices, why microservices arrive, like we have to be know like microservices आया ही क्यों, जब वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन थे. ऐसा नहीं है कि सडनली माइक्रो सर्विसेज आ गया. माइक्रो सर्विसेज के पहले भी एपीआईज बनते थे, काम हो रहे थे, एप्लीकेशन थे, सॉफ्टवेयर थे. बट माइक्रो सर्विसेज ने क्या इम्पैक्ट डाला, माइक्रो सर्विसेज का हमने यूज़ किया एप्लीकेशन में तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके पहले के आर्किटेक्चर कैसे थे, आफ्टर यूजिंग द माइक्रो सर्विसेज क्या चेंजेस आए, और क्यों हमें माइक्रो सर्विसेज, किस सिचुएशन में हमें माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें माइक्रो सर्विसेज को डिज़ाइन नहीं करना चाहिए. वो सब हमें प्रॉज एंड कॉन्स हमें सब देखना पड़ता है कि सिस्टम अगर एंटरप्राइज लेवल पे है, लाइक हमें पता है कि इन द फ्यूचर इट विल बी गोइंग ड्रास्टिकली इंक्रीज, कस्टमर रिक्वेस्ट इज गोइंग ऑन ड्रास्टिकली इंक्रीज डे बाय डे. So on that scenario, enterprise level, we have to be choose the microservices and monolithic like little to medium size of. We'll discuss in the detail about this topic later, but we have to be like this agenda. I'm just trying to covering high level. What are the microservices? First, I will discuss. Then monolithic versus microservices. Then third, I will say characteristics of the microservices architecture. And fourth one is the like microservices ecosystem. And after this, what the points I cover, I have some challenges for all of you, which will be getting better idea like you understood or not properly. Okay. So with good energy, we have to be start. First, I have to be discuss what is the microservices. So, microservices as a architecture is an approach to application development in which large application is built as a suite for the modular services. Each module support a specific business goal and use a simple, well-defined interface to communicate with other set of services. And these services are built around business capability and independently deployed by fully automated deployment machinery. There is a bare minimum centralized management of these services, which may be written in different programming language and use the different data storage technology. In short word, I will say like microservices we are designing because of the modular services, which is like giving the well defined interfaces, and it is only targeted to specific business goal. हम लोग मल्टीपल एपीआई सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हर एपीआई का एक एक एम होता है कि ये एपीआई सिर्फ इसी पॉइंट पे है, इसी लॉजिक के लिए ही काम करेगी, अदर के लिए नहीं. एंड सेकेंड पॉइंट आई विल से इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड. यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस उतना उतना बेटर ऑप्शन नहीं होता है. अगर एपीआई आप बना रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम बेटर समझा जाता है, बेटर माना जाता है. अगर आप एपीआई डिज़ाइन कर रहे हैं, यू हैव टू बी चूज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन दैट मैनर. इट शुड बी लाइक इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल. इट शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट एट द सम later point if the application become very big. And थर्ड पॉइंट आई विल से लैंग्वेज न्यूट्रल. डिपेंडेंसी ऐसे नहीं होती कि आप डॉट नेट पे काम कर रहे हो, आप जावा पे काम कर रहे हो, आप पाइथन पे काम कर रहे हो. मल्टीपल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल प्रोग्रामिंग वी कैन यूज टू क्रिएट द एपीआई सर्विसेज, बिकॉज एट द एंड हमारा यूआई साइड कंज्यूम करने वाला है. वो नहीं देखेगा कि आपने कौन से लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया है. उसे सिर्फ डेटा से मतलब रहता है कि आपने उसे डेटा चाहिए. अपने आपने डेटा उसको कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके लाया है, कौन सा पॉइंट्स, कौन सा स्टैक क्या यूज़ किया है, वो उतना उन्हें मैटर नहीं करता है. दे आर ओनली एक्सपेक्टेड टू गेट कनेक्शन, गेट डेटा कंज्यूम फॉर देयर यूआई साइड. So that's why it is very popular, because of the language neutrality. There is a bare minimum of centralized management of the services, which may be written in the different programming language as use the different data storage technology, as I mentioned. Okay. And after that, I will say microservices is a like huge in demand. Microservices developer are huge in demand because
when you are creating the API services, microservices, you have to be properly built, deployed, test. There is a lot of work what you design, proper functionality from end to end. So the main microservices advantage, I will say, highly maintainable and testable, loosely coupled, independently deployable. Like when, as I already mentioned, like every API should be responsible for one task. And sometimes you see like they also like as a developer, as a good developer, we have to be keep in mind applying the solid principle on the API services. As you know, like what is the solid principle? If you don't know, please comment it down. I will create the better, I will say, good video on this thing. Otherwise, if you are experienced person watching this video, you have to be idea about this what is the solid principle. So what I am trying to say, when we are creating the microservices, we have to be applied the solid principle also over there. Solid principle as a high level, as I'm trying to cover: single responsibility, O for the open for extension, close for the modification, and L for rescue substitution, means it can be substituted with the parent object or child object to call the method. And fourth will be, I will say, interface segregation. It should be like not working as a generic. It should be like every services I have some, like I have a interface, I car purpose I have a drive, but in the aeroplane purpose I have a fly. So I don't create like one generic, in that I have a car method or like fly method, or I will say drive method. For the car purpose, I create the iCar interfaces. For the aeroplane purpose, I will create the iAeroplane services. So both having a like different method declaration, both will be consuming as a different class level. It should not be generic. And fifth one, I will say dependency inversion. It means our high level class should not be dependent upon the lower class. I will say like if you are creating one of the class XYZ, inside that you are just handling the error mechanism, creating the middleware object and calling each and everything inside after the like class ABC. But in class XYZ want to that same functionality in their method or in their properties in their classes also. They again have to be called class ABC, then again calling the object inside that. It should be not good practices. So I should have to be like create in the such manner. It should be like as a generic, I can inject via the dependency injection via the constructor while other members, and consume the same similarity or functionality in my other classes also. So this is the high level of the solid principle which we have to be compulsory applied in the microservices. And next I will say we have to be create our microservices should be as a organized around the business capability. And last I will say like owned by a small team. That's why microservices are very popular and demanding now. Okay. Till now I think I understood, like you are just understanding what I'm trying to cover here in the microservices. Okay, so let I have next point, monolithic versus microservices. As I mentioned कि microservices डायरेक्टली अचानक से तो आया नहीं, वहाँ पे कुछ ऑलरेडी हमारे पास सर्विसेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उनको बेटर करने के लिए माइक्रो सर्विसेज का यूज़ हुआ, माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन यूज़ में आया। तो उसके पहले जो था उसका नाम था मोनोलिथिक, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, उसको और ऑप्टिमाइज और बेटर बनाया गया यूजिंग द सम फीचर्स विच इज़ कन्वर्टेबल, आई विल से इन द माइक्रो सर्विसेज पैटर्न। इसलिए आर्किटेक्चर के अभी नाम हो गए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। इसके बाद भी बहुत सारे आर्किटेक्चर है, एसओ आर्किटेक्चर एंड ऑल, बट मेरा मेन फोकस यही है कि आई विल जस्ट ट्राई टू कवर मोर ऑन द माइक्रो सर्विसेज। ओके, मोनोलिथिक में क्या होता है कि ये एक टाइट कपलिंग होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक लूज कपलिंग। लाइक मुझे कोई एक स्मॉल एडमिन पेज में भी चेंजेस करना है तो मुझे पूरे प्रोसेस में फ्लो में जाके पूरा चेंजेस करना पड़ेगा, एक स्मॉल चेंजेस करने के लिए भी, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और अगर मैंने कहीं पे भी एक भी कनेक्शन पॉइंट मिस किया तो उससे मेरे एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा आफ्टर डिप्लॉयमेंट। इफ एनी स्टेप आई मिसिंग, सो वो प्रॉब्लम आ जाएगा। सेकेंड आई विल से डाउन टाइम इशू भी होता है। लाइक ट्रेडिशनली आप लोग देख सकते हो या सुने होंगे कि जब भी पहले डिप्लॉयमेंट करते थे तो हम लोग शाम के टाइम आफ्टर 9 और 10 o'clock, लाइक मेरा एप्लीकेशन उस समय ज़्यादा यूज़र नहीं यूज़ करते होंगे, उस समय मुझे अपने सर्विसेज को सोल्यूशन को डिप्लॉय में डालना पड़ता था। तो डाउन टाइम का भी थोड़ा मैटर हो जाता है।
बट माइक्रो सर्विसेज में ऐसी चीज़ें नहीं है। राइट नाउ अभी इतना दोनों में फ़र्क नहीं, मतलब डाउन टाइम इतना मैटर नहीं कर रहा है अभी, तो क्लाउड की वजह से हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट बना के। बट ऐसे प्रीवियसली होता था और यू ऑलरेडी वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। सो ये थोड़े हाई लेवल पे डिफरेंस आ जाते हैं इन द मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। ओके, सो मेरा मेन फोकस है माइक्रो सर्विसेज पे। तो आई विल जस्ट कंसिडर लाइक व्हाट इज द component, or I will say characterize in the microservices which we have to be consider. So I will say first point will be a componentization via the services. Like I will say component is a unit of software that is independently replaceable and upgradable. जैसे कि आप अगर if you are knowing like React developer or Angular developer, यू नो लाइक बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब ही होता है ये स्मॉल यूनिट है, रिप्लेसेबल है, अपग्रेडेबल है। So similar thing we are also using, or also like I will tell, in the microservices also we are creating the component services. Componentization the via the services. One main reason for using a service as a component rather than library is that services are independently deployable. That's why we are telling like it is a component. And third, I will say in that componentization via the services, each services talk to other services using the well-defined public API. Okay. Next, I will say organize around the business capability as I mentioned previously also. Properly, we have to be categorized, containerized, implement proper end-to-end business logic around that. Next, I will say smart endpoints and dump pipes. In the microservices, these two keywords like very frequently using smart endpoints and dump pipes. So application built from the microservices aim to be like decoupled and cohesive as possible. Receive a request, applying a logic as appropriate and producing the response. ये API का मेन टास्क होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देना है। रिक्वेस्ट आई, उस पर लॉजिक अप्लाई किया प्रॉपर, उसका लॉजिक बनाया और उसको रिस्पॉन्स दिया, प्रोड्यूसिंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स रिजल्ट। सो रेस्ट इज अ प्रोटोकॉल रादर देन कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल। सो ऑन दैट स्मार्ट एंड पॉइंट्स एंड डंप पाइप्स इसी को ही डेडिकेट किया जाता है। द इंफ्रा चूजेस टू बी लाइक टिपिकली डम act as a message router only. Simple implementations such as the RabbitMQ or ZeroMQ. Okay, that is for the dump pipes. Next, I will say decentralize the governance. So, not in the decentralized governance means like not every problem is a nail, or and not every solution is a hammer. कोई भी छोटा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो सके। तो हर चीज़ को हमें पॉइंट आउट रखना पड़ता है, यूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब, choosing the best technology language suit for the e-services. So it is like in the decentralized governance in the microservices. Data management also one of the key point, because जब मेरा डिसेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू आ जाता है। अगर डिसेंट्रलाइज है तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आती ज़्यादा करके, बिकॉज एवरी एपीआई एट द एंड वो किसी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस से ही होते हैं, बट वी आर लाइक splitting the chunks of data which is working for this particular API purpose only. We have a master database, but again I am telling like not only I will say like everything is we are decentralized. We have a some master database, but for API level just independently working on that, we are just trying to chunking, or I will say scaling purpose, this decentralized movement I will say we are considering in the microservices. And most important point in the microservices, infra automation. When we are using the microservices, we can scale up and down at any time. Then in the faster deployment cycle, it is very good in the microservices. Next, I will say resilient and highly available. Because of this feature, microservices in demand right now, very demanding.
ओके, देन आई लाइक, अभी हमने इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल दिए। अगर इस पे प्रॉब्लम आ गया, हमने कोई भी एपीआई बनाया है, अच्छी चीज़ें होती गुड, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ फेलियर हुआ, वो कैसे इस पे हैंडल किया जाता है, वो उसके लिए ये पॉइंट माइक्रो सर्विसेज अच्छा है या नहीं, वो कैसे कंसिडर करेंगे, ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में हैंडल किया जाता है। एप्लीकेशन नीड टू बी डिजाइन सो दैट दे कैन टॉलरेट द फेलियर ऑफ सर्विसेज, detect the failure quickly, and it possibly automatically restore the services. Okay, that is about the design failure, I will say. Next, I will say in the microservices ecosystem, we have a very good point, load balancer. Microservices में अगर आपने load balancer यूज़ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं बनाया। माइक्रो सर्विसेज में बिना लोड बैलेंसर का यूज़ किया आपने क्या बनाया, कुछ उसका मैटर ही नहीं है। सो डिस्ट्रीब्यूट द इनकमिंग लोड अमंग द मेनी इंस्टेंस ऑफ द माइक्रो सर्विसेज इज वर्क ऑफ द लोड बैलेंसर। हम लोग के पास एवरीडे समझो फॉर द कोई अमेजॉन वेबसाइट, वहाँ पे एवरीडे tons of request is coming. For example, thousand of request is coming for the particular minute. So for thousand requests, I have to be like, if I 100% focusing on the only one server, so it will be I will say some at a certain point it will be giving the latency response time, or sometime it can be crash also. It can't be hold the thing. So because of that, we are creating the server instances on the cloud. We are distributing our requests like 50 requests server 1, 50 requests server 2, and creating the like I will say disaster management type of redundancy data type of management over there. Because if anything is failure, we have a backup over there. Okay. Next, I will say in the microservices ecosystem, I have service discovery server. Instead, like I will say, manually keeping track of what the microservices that are deployed currently and what host and ports will need service discovery functionality that allow through an API. So microservices to self-register a startup. And after that, I have a very good important point, API gateway in the microservices. So in the API gateway, insulate the client from how the application is partitioned into the microservices. Next, I will say insulate the client from the problem of determining the location of service instances. Next, I will say provide the optimal API for each client. This is the API gateway task. Then I have next central configuration server. Instead of local configuration per deployed unit, we need a centralized management of configuration. And next, I will say monitoring is one of the major point. When there is a lot of microservices in your ecosystem, monitoring become essential. Like कौन सी API प्रॉब्लम में जा रही है, तो we have to be monitor also. That is the main concern. I guess like headache also. Containerization, intentionally containerization is a single services or process. Make it very simple to manage and update the services. Next, I will say monitoring I covered in the ecosystem microservices, central configuration, then containerization. I will say one of the microservices, like in the microservice, one of the point, centralize the log analysis. Like since a transaction will consist of the server microservices called log aggregation and central analysis is important. Okay, and one of the major point I will say circuit breaker. So what is the use of circuit breaker in the microservices? To use, I will say, avoid the chain of the failure problem. We need to apply the circuit breaker pattern. Like I know, like I have a API 1, 2, 3 like that, and I know like in the API 3 कुछ पॉइंट्स पे मुझे वो इशू आ गया और 4, 5 पे कंटिन्यू करना है, तो मैं क्या करूँगी, वो थर्ड पे एक सर्किट ब्रेकर लगा दूँगी। So that's, I think I cover most of the points in the microservices as a high level. And I will also create one mini application in the microservices. So for that purpose, you have to do like, please like, share, subscribe this channel and make a comment around 50.
then I will definitely create one of the simple microservices UI, and I will say API also, which is consuming as a UI side using Angular or React, anything I can use. But my main concern about the creation of the API in the .NET Core. So for that, please like, share, subscribe this channel. Thank you. Meet you in the next video. Bye. Take care.